While we are looking at the timeline and we have seen what has happened in the past, few 5-year plans were quite progressive. It was very good to see that in few plans, 5-year plans which were made, especially after the 1960, family planning or population planning, all these things, they were very much recognized. There were separate chapters that emphasized that Pakistan has to control population planning and has to promote family planning. However, I have already discussed that there were many eras, especially the 1965 and then 70s, the early 70s, and then the little even later time, जिसमें पाकिस्तान had to face wars and पाकिस्तान का एक हिस्सा भी हमसे अलग हुआ. तो there was a political turmoil और चीज़ें जो थी वो उस तरह से किसी भी सेक्टर के लिए, किसी भी एरिया के लिए पाकिस्तान में दुरुस्त साबित नहीं हुई. आगे अगर हम बात करें 5-year plans जो पाकिस्तान में बनते चले गए, 5th and 6th 5-year plan, even they were not very encouraging when we talk about the family planning. जैसे कि there was a disruption and delay in the preparation of the 5th plan और 1978 और 83 में बना. It was launched in 1978. The 5th 5-year plan, it was also not a very bold document so far a family planning was concerned. We also know very well this was a time when General Zia, later in the, he took over the country and considering some Islamic, उसने जो कुछ पॉइंट्स को सामने रखते हुए बहुत सी ऐसी कंट्री में चीज़ें थी, तो पाकिस्तान एक बड़ी तब्दीली जो थी वो नज़र आई, जिसमें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को भी कटेल होता नज़र आया. हावेवर उसके बाद हमें अगले प्लान के अंदर थोड़ी सी इसकी रियलाइजेशन में बेहतरी नज़र आई, विच वॉज quite better in population policy for the 6th 5-year plan जो कि 83 और 88 में बना. It was a program जो कि इस टाइम तक आके इन्होंने प्रोवाइड किया इंटरेक्शन ऑफ द फर्टिलिटी मैनेजमेंट विद अदर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. ये जो पॉलिसी थी 83 टू 88 के दरमियान बनी, इट एम्फसाइज ऑन सम ऑफ द वेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स पे जिसने से काम किया. सबसे पहले तो इसमें पॉपुलेशन को कर्टेल करना या पॉपुलेशन की रियलाइजेशन को कहा गया इट इज़ अ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. It aimed at behavioral change, favoring the small family norms within an acceptable social and culture framework. At least these words written in that document, it was very good for the understanding for the common people और हम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते गए. इसी के अंदर जो अगली चीज़ थी वो कहा गया कि इट हैड टू कंस्ट्रक्ट अ प्रोग्राम ऐसी पॉलिसीज विच बेस्ड ऑन द लोकल नीड ऑफ द पीपल by enlisting, by knowing, by understanding the community participation and devolving and giving responsibility and authority at the ground level. इसी तरह से जब तक हम कम्युनिटी को साथ नहीं मिलाएंगे या हम लोगों की नीड और बिहेवियर्स को जब तक चेंज नहीं करें, फैमिली प्लानिंग जैसा जो एक आपका कह सकते हैं सेंसिटिव इशू है, it would have never been solved. Even still we are fighting with it. We are unable to look at the to stop rural people to so much increase their family size, which is still about 7 and 8 people. Documents के अंदर तो कहीं 4 या 5 नजर आएगा, लेकिन things are not very positive in Pakistan. So coming back to the again the policy implementation जिसके अंदर आई थी, it also solicit involvement of the range of the target groups and NGOs for the expanded coverage. तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट सेक्टर को भी इस 83 और 88 के दरमियान जो प्लान बना उसके अंदर एक रास्ता दिया गया, एक उनको फैसिलिटेट करने का कहा गया, गवर्नमेंट के साथ लग के रखने का कहा गया कि हम लोग पॉपुलेशन को रोकने के लिए, ख़ास तौर पे फैमिली प्लानिंग को कंट्री में ओपन करने के लिए, इस प्रोग्राम को एक्सपैंड करने के लिए जो है वो काम किया जाए. इट ऑल्सो सीक इंटीग्रेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ with the programs of the other departments for diversification. It also made women participation and उन्होंने beneficiaries कहा. Women, you see when you talk about the population planning programs, policies, implementation, you talk about the family planning program, women are the beneficiaries and women are also at the side जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा harm भी जो है वो हो सकता है. तो स्टेक होल्डर्स इसमें ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके बारे में भी बात की गई. इट ऑल्सो डिवाइस अ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी टू रिमूव पब्लिक मिसगिविंग्स and create demand and promote these approaches.